Good morning, students. Today I am going to explain properties of definite integral. Before this, we have done the some question of using without properties. Integral of definite integral directly and using substitution method. Two methods I have explained. So next I am going to explain. This is very much important. The questions in board examination coming to solve using the properties of definite integral. So now we are going to learn and see the proof of these properties of definite integral. So first property, you will see in the NCERT book, it is denoted with the help of P naught, P0, you can say P naught. So first property, integral of fx with respect to x from a to b, you can say over a to b, is independent on its variable. Means you can replace the variable, you can change the variable, but then also its answer will remain same, because you know that when you will integrate this fx with respect to x, then answer comes out in the terms of x in case of indefinite integral. But as you find out its definite integral, you will find out a real unique value. You will get a unique value if its limit is a to b, so answer will comes out in the form of ab. Okay, correct. So this is independent on its variable. Means at the place of x, I can put t, I can put u, I can put v, whatever I will put, it will give the same answer. Answer will not be changed. So here is the proof of this property. If I will consider this x is equal to t, suppose students I have considered x is equal to t, and after that we will differentiate it. So we will get dx is equal to dt. So as according to the substitution property, as I have considered x is equal to t, we got dx is equal to dt. So we need to change its limit also. So what is lower limit? A. If I will put x is equal to a, then we get t is equal to a, right now, because t is equal to x, therefore t is equal to a. If I will put x is equal to b, I can get t is equal to b. So upper limit it becomes b. So this fx dx can be replaced. If I will put x is equal to t, so dx is equal to dt. And what we got its lower limit? Again a, and its upper limit is b. So both are the equal. So therefore definite integral is independent on its variable. It can be changed. So this property, in the proof of some question, we can use this type of property. This is called the first property. It is denoted by P naught. When we'll use this property, so we need to write either first property or using the property P naught. Next, first P1 is given, second property is given P1. So what is the property? Integral of fx with respect to x over a to b is also equal to minus times of fx dx over b to a. Means on changing its limit, lower and upper limit, on interchanging, its sign will be becomes negative. Suppose करो किसी क्वेश्चन को 0 से 2 सॉल्व करना है. Okay, if I will solve from 2 to 0, so its sign is becomes negative. So let us see its proof. To prove this property, if this is given, so think its antiderivative of fx is capital Fx. So we got capital Fx from a to b. Firstly, which limit will put? Upper limit. So what it becomes? Fb minus f of a. Suppose if I will take here minus common, so I can write it f of a minus f of b. And f of a minus f of b, if you see this with respect to it, so you can understand that in this part a becomes the upper limit and b is the lower limit. Means this can be written the integral of fx dx over b to a, not a to b, it becomes b to a, but there is the minus sign. So hence we can say that integral of fx dx from a to b is also equal to minus times of b to a of fx dx. Okay. Next, third property, very much important property. This property you can use in question if you want, otherwise you cannot use. If minus sign is there, you can make it positive. It's opposite, you can use now minus b to a of fx dx. So you can make it is equal to a to b of fx dx. Sign plus हो जाएगा, correct ना? This is
very much important property, especially in the case of trigonometric function. In the case of modulus function, mod function, we are using this property. So what is the property? This property, if you'll see student P2. So this property is given integral of fx with respect to x over a to b also can be written, it is equal to, means you can say this is also equal to integral of fx with respect to x over a to c1 plus this c1 to c2, you can write fx dx plus c2 to b, means this ab can be break in the sub interval, small sub intervals. But what are the c1 and c2 or c3, you can break in c3, c2 to c3 plus c3 to b of fx dx. But what may be the c1 and c2 or c3 what is? So this may be, this c1 must be greater than a, c1 must be smaller than c2. Here I have written where a should less than c1, c1 should less than c2, and c2 must be smaller than b. In this part you can break this in the sub interval of a to c1, then c1 to c2, then c2 to b. Correct. So afterwards I will explain its example. With example you will understood where can you apply this theorem, this property. So first we'll see its proof. How can we prove this property? Suppose, so this easily can be proved from the RHS. राइट साइड से हम इजीली इसको प्रूव कर सकते हैं from RHS. As earlier I have said, if its antiderivative is given capital Fx, so what we get? Capital Fx from a to c1 plus capital Fx from c1 to c2 plus capital Fx from c2 to b. Then apply the limits. So it upper limit first, so it becomes f of c1 minus f of a plus f of c2 minus f of c1, correct now, plus upper limit f of b minus f of c2. Look here, some terms can be cancelled. What may be cancelled? F of c1 cancelled by minus f of c1 and f of c2 cancelled by minus f of c2. So what you can get here? F of b minus f of a, f of b minus f of a. So f of b minus f of a, this is also equal to integral of fx with respect to x over a to b. So as we proved that this can be done in this way. So I will give one example first of that where we'll apply this property. This is very much useful property, but we are not going to use in all the questions. We use in some specific. Suppose one question is given, one example I will explain for this. Suppose find the integral of mod of x plus 2 from minus 3 to 2 of dx. Correct? Suppose we want to find out the integral of this. So already you know that mod of x plus 2, this mod of x plus 2 having two values, correct now? Already you know, so no need to more explanation for that, because this is equal to minus time of x plus 2 when x plus 2 is less than 0. Is it clear now? And this gives the positive value when x plus 2 is greater or equal to 0. So you will get that mod of x plus 2 is equal to minus time of x plus 2 when 2 को transpose करो when x is less than minus 2, and next this is equal to plus x plus 2 when x is greater or equal to minus 2. So look here, the limit, what is the given limit? Minus 3 to 2, and between minus 3 to 2 this number is coming from where it may be negative and positive. One side it is negative and other side it is positive. So there we got a number minus 2 in between that, na? Correct na? Because minus 2 is greater than minus 3. So we can get this limit 1 and this is the another limit. So using the third property, how can we use this property? Look here. So we write here by using third property. But third property को हम denote किससे करते हैं? P2. By using P2, third property, by using P2, property number 3 of definite integral, I can write I is equal to minus 3 to minus 2 first limit, minus 3 to minus 2 of mod of x plus 2 dx.
plus integral of mod of x plus 2 over minus 2 to plus 2 of this with respect to x. As you have seen here, what is, we got negative and also we got positive. So put this value, easily you can understood here. इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट -3 से -2 मीन्स लेस देन -2. व्हेन इट इज लेस देन -2 then it gives minus time of x plus 2, and here -2 से greater, at the case of it is greater than -2, it gives positive. So I can write here -3 to 2 minus time of x plus 2 of dx plus -2 to 2, यहाँ क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा, करेक्ट ना, x ऑफ 2. देखो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में हमको थर्ड प्रॉपर्टी यूज करना होगा. We cannot solve this type of question without using this third property. So in this type of question we need to use the third property. Now I hope you understood it. Is it clear? So look here, minus can be taken here outside, and integration of x, what is x square by 2? Integration of x is x square by 2. X square by 2. So students, this is, you understood, I have shown here, you can see, maybe possible you have not seen in the video, but once again I will explain here, mod of x plus 2, and then again you will get it right, x square by 2 plus twice of x plus here, correct na, from -3 to -2 is here, sorry, -2 plus, what is its integration, x square by 2 plus twice of x from -2 to +2. Is it clear now? You understood? Then apply the limits. Put the limit first. Which limit you will put? Upper limit. So on putting the upper limit in first, you will get it minus time of. So I will put here the upper limit. So -2 square plus 4 upon 2 plus 2 into -2, that is becomes -4. Then minus और ब्रैकेट में देखो यहाँ -3 का स्क्वायर 9, so 9 by 2 -3 to the 6, करेक्ट ना, प्लस first upper limit, that is 2 square 4 by 2 plus 4 minus 4 by 2 -2 to the 4. So on solving this you will get minus here, 4 upon 2 is 2, -4 minus 9 upon 2 minus plus 6, correct na, plus 2 plus 4 minus 2 plus 4, correct. Look here, 2 plus 4 8 minus 4 we got 4, correct na, 8 minus 4 that is 4 minus 9 upon 2 plus 4 plus 2 6, ये देखो 2 minus 2 cancel, 4 plus 4 8, 9 to the minus, we got it 9 to the 8, 4 to the 8 minus 9, so minus 1 upon 2, 8 minus 9 minus 1 upon 2 plus 8, देखो ये हुआ plus 1 upon 2, 8 plus 1 upon 2, 8 to the 16 plus 1 17 by 2, you can write 8.5 also. So this is the answer of this question. So here I have applied the property third. It is denoted by P2. So in this way you need to use this property and solve the question. Correct? Next property I will explain. Next property number 4. This it will be denoted by P3. So next property we'll see property number 3. This is also very much important property. Property number 3. So look, what is the property number 3? Integral of fx with respect to x over a to b also can be written, means integral of fx over a to b with respect to x also equal to integral of f of a plus b minus x over a to b, means both this integral is also equal to this integral.
means in some question to make it convenient we can use this property to solve the question. In so many questions we'll use this property, so very much important question. How you learn this property means x will be replaced by, x को replace किया जा सकता है by a plus b, lower limit plus upper limit minus x. So ये both का आंसर सेम होता है. Look how can you understood this property. So I will explain its proof. देखो ऐसे क्वेश्चन में यहाँ प्रूफ के लिए in some question also will the requirement proof, so we'll use this property. How can you prove this? Look it, x को रिप्लेस करो सेम टाइप के टर्म से. क्या प्रूव करना है? x इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस एक्स. x को पहले हम लेट ही करेंगे a प्लस बी माइनस टी. यू अंडरस्टूड? ये हम ऐसा लेट करेंगे, लेट. सो लेट इट x इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस टी. करेक्ट? देन डिफरेंशिएट इट. व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस? dx इज इक्वल टू a का डिफरेंशिएशन 0 बिकॉज रियल नंबर b 0 और ये हो गया माइनस dt. So dx is equal to minus dt. If I will consider this I, so I is equal to, I can write a to b of fx dx is equal to, what we'll put at the place of x? x के place पे हम रखने वाले हैं a plus b minus t. तो देखो ये हुआ. And limit, देखो limit is very much important. अभी देखो x और t की वैल्यूज क्या हो सकती है. इफ x के प्लेस पे हम a पुट करें, लोअर लिमिट x इज a, इफ x इज इक्वल टू a, इफ x इज इक्वल टू a, देन व्हाट मे बी t पुट करेंगे यहाँ पे. देखो a प्लस b माइनस a, सो वी गॉट b, तो t इज इक्वल टू b. एंड इफ x इज इक्वल टू हम b पुट कर दें, देखो x के प्लेस पे हम b पुट करेंगे, ये b और b कैंसिल हुआ. करेक्ट ना? b कैंसिल हो गया. यहाँ पे a मिला और यहाँ पे हमने b पुट किया तो b कैंसिल, so t equal to we got a. करेक्ट ना? so in this way अभी देखो यहाँ पे, so lower limit is becomes b and upper limit is becomes a. so ये देखो लिमिट इंटरचेंज हुआ. यहाँ पे b, here is a, f of a, x के प्लेस पे क्या रखेंगे? a plus b minus t into dx, and dx क्या मिला? minus dt. करेक्ट? We got minus dt. Then look here. This can be written, minus को outside ले सकते हैं. ये हुआ देखो b to a of f of a plus b minus t dt. And if you remember second property, इसको हमने p1 यूज किया था, तो p1 में बताया गया एक माइनस को हम प्लस कर सकते हैं अगर लिमिट को इंटरचेंज कर दें. तो by applying second property p1, what can we write? this is also equal to ये प्लस होगा और यहाँ फाइंड आउट हुआ क्या मिलेगा? a to b लिमिट विल बी इंटरचेंज ना, ये लिमिट इंटरचेंज हो जाएगा. सो ये लिमिट इंटरचेंज होके क्या हुआ? माइनस साइन रिमूव होगा एंड लिमिट इज बिकम फ्रॉम a to b और यहाँ पे मिलेगा a f ऑफ a प्लस b माइनस t dt. करेक्ट? देखो ऐसा फाइंड आउट हो गया. वी गॉट इट. अगेन इफ x को हम यहाँ पे सपोज करो, x को हम बाय यूजिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी, एज यू नो अप्लाइंग फर्स्ट प्रॉपर्टी बाय यूजिंग p नॉट, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी. सो बाय यूजिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी, so by using first property this t can be replaced with any other variable. So if I will replace this t by x, so this is also equal to a to b of f of a plus b minus x dx. देखो ये इक्वल हुआ, ये क्या था? a to b of fx dx is equal to. So देखो ये प्रूव हो गया. So this is the our fourth property, very much important property. You need to learn this property. In so many questions we'll use this property. According to this property, what can we say? x के प्लेस पे हम lower limit plus upper limit minus x पुट कर सकते हैं. Then also we get the same answer. So both are having the same answer. Here is the proof of this. This is the property number 4. Next I will explain
फोर्थ प्रॉपर्टी, सॉरी फिफ्थ प्रॉपर्टी, जिसको हम P4 डिनोट करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 5. What is property number 5, students here? So this property is also related with this property. इसी property के according हम लोग fifth property देखेंगे. What is the property? I equal to हम लोग मोस्टली नोट कर लेते हैं, नहीं भी नोट करो नो प्रॉब्लम. 0 to a of fx dx. 0 to a of fx dx. So it is equal to, if you use this same property x के प्लेस पे अगर हम ये फोर्थ प्रॉपर्टी को यहाँ यूज करें तो देखो व्हाट इज लोअर लिमिट 0, व्हाट इज अपर लिमिट 8. सो x के प्लेस पे क्या रख सकते हैं 0 प्लस a माइनस x. तो क्या हो सकता है f ऑफ a माइनस x ओवर a टू 0 टू a. तो देखो ये है फिफ्थ प्रॉपर्टी. This is also called particular case of this third property. Same thing है, अगर a to b हो तो a plus b minus x हो गया, तो 0 to a हो तो क्या हो सकता है 0 plus a minus x. तो same we got f of a minus x dx. तो easily you can prove this property also by using this way. How? x के प्लेस पे रख देना है a minus t और फिर अप्लाई करना है सेम प्रोसेस. So I hope you can prove. तो ट्राई करोगे, if नहीं समझ में आया you can ask this property. So this is also called particular case of this third property. वाई पर्टिकुलर केस, ये स्पेशली 0 के लिए है और ये a और b में भी एनी रियल नंबर के लिए होगा, बट इट इज फॉर 0 टू a. करेक्ट. सो दिस इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6, इसको हम P5 से डिनोट करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 6. और ये दिस प्रॉपर्टी नंबर 6 फॉर 0 टू 2a, दिस प्रॉपर्टी फॉर 0 टू 2a. सो इंटीग्रल ऑफ x dx over 0 to 2a with respect to x is equal to this property. So what may be the property? How can you learn this property? So I will explain. क्या हो सकता है इसका आंसर. देखो इसका आंसर होता है 0 to a of fx plus f of 2a minus x dx. ये प्रॉपर्टी है. अभी इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं and then we will understood what is this property. So I am going to explain this property number 6. So this property also can be proved as I have proved the property number 4. So what is students here, look this property fifth को अगर हम यहाँ proof करें, proof of the fifth property. So for what is given property? Property is given I is equal to, क्वेश्चन है 0 to 2a of f of x dx. To prove this property, पहले हम अप्लाई करेंगे using our third property. Using our third property by using P2, by using the property number 3, by using property 3. So if you use the property 3, so what can you write? You can write 0 to a. क्योंकि यहाँ पे देख you can see ये a जो होगा greater than 0 and less than 2a होगा. So 0 to a of fx dx प्लस क्या हो सकता है, प्लस हो सकता है a to 2a of fx dx. करेक्ट ना? ओके, लुक हियर. सो दिस पार्ट वी गॉट. ये देखो प्रूफ में ये वाला पार्ट आ रहा है, ये पार्ट तो हमको फाइंड आउट हो गया. वी गॉट दैट पार्ट. करेक्ट ना? देखो ये पार्ट हम मीन्स इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए हम इस टाइप से नोट कर सकते हैं 0 to 2a of fx dx. ये a 0 से ग्रेटर होगा और 2a से लेस होगा. सो अगर हम P2 सेकेंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी यूज कर दें, P2 यूज करें, तो इसको नोट कर सकते हैं fx dx फ्रॉम 0 to a, इंटीग्रल ऑफ fx dx फ्रॉम a to 2a. तो दिस पार्ट इज ऑलरेडी देयर. इसको I will consider this I1 और फिर इसको हम समझते हैं कि कैसे ये सिंप्लीफाई हो सकता है इन दिस वे. सो देखो ये इंटीग्रल ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x ओवर a to 2a. इफ इन I1 इक्वल टू क्या हुआ a to 2a ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x ओवर a to 2a. इफ हम यहाँ पे लेट करें x इज इक्वल टू 2a माइनस टी. x के प्लेस में हमने क्या लेट किया
2a minus t. So dx is equal to माइनस ऑफ dt. देन लिमिट फाइंड आउट करते हैं. लिमिट क्या हो सकता है? t. इफ x इज इक्वल टू a, देखो x के प्लेस पे अगर a रखते हैं तो t यहाँ ट्रांसपोज करोगे और सॉल्व करोगे. t इक्वल टू 2a माइनस a, सो आई कैन गेट t इज आल्सो इक्वल टू a. इफ x इज इक्वल टू, हमने पुट किया अपर लिमिट 2a, तो देखो x के प्लेस पे 2a कैंसिल हो गया. t इक्वल टू 0, so we can get t equal to 0. Correct ना? x equal to a, then t equal to a. If x equal to 2a, then t equal to 0. Correct? So hence this I1 is becomes equal to, I1 किसके इक्वल होगा? I1 is equal to लोअर लिमिट क्या हो गया? देखो लोअर लिमिट हो गया a. करेक्ट ना? लोअर लिमिट हुआ a एंड अपर लिमिट जब x के प्लेस पे 2a पुट कर दिए t equal to 0 एंड x के प्लेस में हमने क्या रखा? 2a minus t and dx is equal to minus dt. Okay, देखो this minus means it also can be written minus times a to 0 of f of 2a minus t dt. If I will use here फर्स्ट एंड सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर यहाँ पे हम फर्स्ट और सेकेंड प्रॉपर्टी यूज कर दें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी से क्या होगा? t कैन बी रिप्लेस्ड बाय x. सो बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड प्रॉपर्टी टुगेदर, ये बोथ प्रॉपर्टी को हम एक साथ में अगर यूज कर देते हैं, ये दोनों प्रॉपर्टी, इफ बोथ प्रॉपर्टी आई विल यूज, सो आई कैन रिप्लेस t with any other variable. so चलो हम x से रिप्लेस कर देते हैं एंड माइनस साइन से लिमिट इंटरचेंज होगा. देखो ये I1 इज इक्वल टू क्या फाइंड आउट हुआ? फ्रॉम 0 to a ऑफ f ऑफ 2a minus x of dx. so I इक्वल टू फर्स्ट पार्ट है, दिस पार्ट ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं. क्या मिला है? फर्स्ट पार्ट इज 0 to a of fx dx plus next I1 इक्वल टू, देखो क्या फाइंड आउट हुआ? I1 इक्वल टू 0 to a of f of 2a minus x dx. So this also can be written in the same way. अगर इसको हम combine करें 0 to a fx dx and 0 to a, both are having the same limits. So therefore this also can be written together 0 to a of fx plus f of 2a minus x dx. So this is the your property number. This is which property? This is property number 6. This is property number 6. Next, with the help of this property, I can get next property, that is called property number 7. And this is also a particular case of this property. Like यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया 0 to a of fx plus f of 2a minus x. तो इसी से हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी सॉल्व कर सकते हैं, बट नॉट वेरी मच नीडेड. यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ ओनली दिस सिक्स्थ प्रॉपर्टी. तो नेक्स्ट सेवेंथ प्रॉपर्टी, व्हाट इज द सेवेंथ प्रॉपर्टी? आई विल एक्सप्लेन हियर विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी. ऐसे हम समझ सकते हैं कि हमारा सेवेंथ प्रॉपर्टी क्या होगा. So what is seventh property? Property number 7. Property number 7. So look the students, property number 7. What may be the property number 7? क्या हो सकता है ये property number 7 हमारे लिए? So property number 7 for same type के questions के लिए होता है. Means this question only in different way क्या हो सकता है? So integral of 0 to 2a of fx dx is equal to, ये क्या पॉसिबिलिटीज है? देखो इसकी पॉसिबिलिटीज क्या है. सो दिस देयर आर द टू पार्ट. इट मे बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to a of fx dx. बट व्हेन, देखो कंडीशन है इन सेम प्रूफ में यू कैन अंडरस्टूड. इफ f of 2a minus x is equal to fx. If f of 2a minus x is equal to fx आ जाए, जैसे sin 90 minus theta is equal to, sorry, sin
180 minus theta is equal to sin theta. So f of 2a minus x means sin pi minus x is equal to sin x. So if f of 2a minus x is equal to fx होगा और इसी को same if I will put in the sixth property f of 2a minus x के प्लेस पे look at the last once again I want to show that if यहाँ पे अगर यहाँ पे हम रखते हैं here नीचे देख लो अगर हम यहाँ रखते हैं f of 2a minus x के प्लेस पे अगर हम पुट करते हैं where at the place of f of 2a minus x क्या रख सकते हैं f of 2a minus x equal to fx तो ये हो सकता है in the same property you can see 0 to 2a of fx dx is equal to क्या प्रूव हुआ था 0 to a of fx plus f of 2a minus s f of 2a minus s किसके इक्वल हो जाए if fx के इक्वल हो जाए so this becomes fx plus fx dx right so this is equal to twice of क्या मिलेगा twice of we will get 2 times of 0 to a of f of x ds so this is the particular case of the property number 6 and if f of 2a minus x second part of the seventh property if f of 2a minus x is equal to minus fx अगर ये minus fx हो जाए for example cos pi minus x तो cos pi minus x equal to we'll get minus cos x right now तो minus cos x minus fx होगा so therefore 0 to 2a of fx dx is equal to क्या मिलने वाला है देखो यहाँ पे हुआ 0 to a using sixth property 0 to a of fx और f of 2a minus x के प्लेस पे क्या रखेंगे minus fx dx तो आंसर क्या मिलेगा ये 0 फाइंड आउट हो जाएगा so this is the next property so if f of 2a minus x equal to minus fx then answer क्या होगा 0 so it will be becomes 0 so this is the seventh property I hope you understood the seventh property ये पर्टिकुलर केस था प्रॉपर्टी नंबर 6 का नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 8 जिसको हम P7 से डिनोट करेंगे तो देखो ये व्हाट इज द प्रॉपर्टी दिस प्रॉपर्टी फॉर माइनस a टू a के लिए है ऑफ f ऑफ fx dx तो देखो यहाँ पे भी टू पॉसिबिलिटीज है देयर इज आल्सो टू केसेस दिस इज इक्वल टू 0 ये 0 होता है फर्स्ट of this property it is equal to 0 if f of minus x is equal to minus fx तो इसको हम लोग बोलते हैं fx is an odd function means fx is an odd function what is odd function like sine of minus theta is equal to minus sine theta. So sine theta is an odd function. So if f of minus x equal to minus fx, then integral of fx over minus a to a with respect to x is equal to 0. When it is an odd function. And second, integral of fx with respect to x over minus a to plus a is equal to twice of 0 to a of fx dx. This is so now we'll look at its proof when if fx is an even function. What is even function? Fx is an even function. What is an even function? Means f of minus x is equal to f of x. For example, cos of minus theta is equal to plus cos theta. देखो ये cos theta क्या है इवन फंक्शन है बट sin theta क्या है ऑड फंक्शन है दिस इज अ इवन फंक्शन करेक्ट so this is the last but not least very much important property for minus a to a means from minus pi by 2 to plus pi by 2 we'll look its proof how can we prove this property so to prove this property first one are you can say in general integral of
fx from minus a to plus a dx by using third property. What can we write? We can write it, क्या नोट कर सकते हैं इसको? This can be written minus a to 0 of fx dx plus 0 to a of fx dx हो सकता है ऐसा, बिकॉज ये जो जीरो है ना माइनस ए से ग्रेटर हुआ एंड लेस देन प्लस ए हुआ, तो फर्स्ट इंटरवल एंड दिस इज द सेकंड इंटरवल, सो वी कैन यूज दिस ना, करेक्ट, एंड दिस पार्ट इज करेक्ट, नो नीड टू चेंज इट. इस पार्ट को हम I1 सपोज करते हैं एंड विल लुक इट हाउ कैन वी सॉल्व दिस, क्या हो सकता है इस प्रॉपर्टी में, कैसे हम इस प्रॉपर्टी को सॉल्व कर सकते हैं. वंस अगेन स्टूडेंट्स सी हाउ आई एम गोइंग टू प्रूव इट ना, कैसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं. इसके प्रूफ के लिए देखो यहाँ पे हमने ये कंसीडर किया, ओके, सो इफ आई विल कंसीडर दिस पार्ट, तो देखो ये ऐसा कि जैसा कि हमने ये कंसीडर किया है, इस पार्ट में अगर हम I1, so for I1 if x is equal to हमने ले लिया minus t, so what is dx, so you will get dx is equal to minus dt, और लिमिट थिंक करो, if x के प्लेस में हमने रखा माइनस a, ये हो गया माइनस टी, कैंसिल होके क्या मिला, t इक्वल टू a, तो अपर लिमिट, लोअर लिमिट क्या हुआ, x इक्वल टू, अगर हमने जीरो पुट किया, x इक्वल टू जीरो, so 0 is equal to minus t, so this implies t is equal to 0, correct ना, so t is equal to I got 0, t is equal to क्या मिला 0, देखो ये t is equal to हमको 0 फाइंड आउट हो गया. नेक्स्ट अगर ये हम पुट कर दे I1 में, है ना, अगर इसको हम I1 में पुट करते हैं, so what can we get, I1 में अगर इस प्रॉपर्टी को हमने पुट किया, so I can get that I1 is equal to what we got it, I1 के प्लेस पे देखो हमको फाइंड आउट क्या हुआ, यहाँ पे लिमिट्स फर्स्टली विल पुट, व्हाट इज द लोअर लिमिट इज बिकम्स a, तो लोअर लिमिट हो गया a, और अपर लिमिट क्या है 0 एंड x f ऑफ x के प्लेस पे क्या रखना है माइनस t ऑफ dt, करेक्ट, माइनस t ऑफ dt, सो माइनस t ऑफ dt, नॉट dt सॉरी, माइनस dt, और इस माइनस को we take here, so it becomes a to 0 of f of minus t dt, correct na, f of minus t dt. So by using p1, p0 and p1 means first and second property, so first and second property अगर हम यूज करते हैं, तो देखो ये मिला I1 is equal to, माइनस से प्लस हो जाएगा, लोअर का अपर होगा, और f ऑफ माइनस x ऑफ dx होगा. अगर इस वैल्यू को हम i में पुट कर दे, तो i is equal to what can we get, तो देखो i is equal to क्या फाइंड आउट हो सकता है, i is equal to, I can get i is equal to इंटीग्रल ऑफ I1 के प्लेस पे क्या हुआ 0 to a of f of minus x dx plus 0 to a of fx dx. फर्स्ट केस, इसका फर्स्ट फॉर्म देखो एक्सप्लेन किया गया, इफ f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, तो देखो यहाँ रखेंगे माइनस ऑफ एफ एक्स और ये कैंसिल हो जाएगा, और फर्स्ट केस में आंसर क्या मिलेगा 0, सो दिस इज इक्वल टू 0, राइट ना. सेकंड केस इफ f ऑफ माइनस एक्स, if f of minus x is equal to plus fx, तो देखो यहाँ प्लस fx रखेंगे, प्लस fx 0 to a, तो फाइंड आउट क्या होगा I इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to a ऑफ fx dx, करेक्ट ना. तो ये देखो लास्ट प्रॉपर्टी है बट नॉट लीस्ट, so go through these all properties, look its proof nicely. If any problem in these properties you can ask and try its proof also. Next time I will explain the question based on this definite integral. Thank you.